हमदो सना उस रब के लिए जिसकी रहमत नेमत और मग़फ़िरत का फैज़ान कभी रुकता नहीं। दुआ है मेरा पाक परवरदिगार आपका हम सब का दामन खुशी से भर दे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम भी ठीक हैं। खुशामदीद आप सबको भी मिस्र के एक और ख़ूबसूरत शहर लुक्सर में। हम अभी अभी पहुँचे हैं रात 12 बजे। मालिन का कान हो गया है बंद और इजाज़ का भी। 1 घंटे की फ़्लाइट थी। अब बच्चे जो हैं वो सामान लेने के लिए खड़े हैं और फिर हम जो हैं जाएंगे होटल में और फिर सुबह जाएंगे इंशाल्लाह ताला बहुत सारे महल देखने। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। चलें जी चलते हैं होटल की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ये है जी होटल की तरफ से गाड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच आए हैं ड्रीम आइलैंड अपने होटल। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है ना एक गांव की तरह है। ये देखें एक वो बेंगलोर टाइप का बनाया हुआ है और ये देखें आग भी जल रही है यहाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो जी चलते हैं अंदर इस हवेली के। एक गांव की खूबसूरत हवेली। अहलन व सहलन। सामान हमारा ऊपर आ चुका है और ये हमारा रूम। वाह माशाल्लाह। ये شبك سمك الزينة دي شبك سمك صح؟ She look like my sister. Yeah. Is she हमदा सना उस रब के लिए जिसकी रहमत नेमत और मग़फ़िरत का फैज़ान कभी रुकता नहीं। दुआ है मेरा पाक परवरदिगार आपका और हम सब का दामन खुशी से भर दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। ये देखें जी कितनी खूबसूरत सुबह है और ये देसी माहौल पूरा पाकिस्तान के गांव लग रहे हैं और ये बनाना ही बनाना इधर लगे हुए हैं। और ये इनके होटल का जो है ना वो स्विमिंग पूल है। ये होटल इन्होंने ऐसा बनाया हुआ है जैसे एक घर है। तो लुक्सर की खूबसूरत सुबह से ढेरों सलाम और ढेरों दुआएं। इस तरफ से नज़ारा देखते हैं। सफाइयाँ चल रही हैं। ये देखें पानी का एक गिलास और शुगर बड़ी अच्छी चल रही है क्योंकि वॉक 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 और सिर्फ वॉक ही हो रही है। कितनी है अभी नज़र नहीं आ रही। 122। चलें जी खुश रहें आबाद रहें हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आसानियों में रखे दुनिया और आखिरत की इंशाअल्लाह। ये मेरी शहजादियाँ सोई हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। गुड मॉर्निंग शफ़ा शहजादी। कैसी हो? नींद आई अच्छी? उठ जाओ ना। ओ माँ काका सुबह हो गई उठ जाओ। सब उठने की दुआ पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाह सफ़ा मेरी जान मेरी बेटी रेडी हो गई है। अब हम जा रहे हैं फ्रूट टूक करने। चलो जी जी खोलो। लिफ्ट में से हम निकल चुके हैं। सुभान अल्लाह माशाल्लाह इतनी खूबसूरत सुबह है और जोने की नीचे इंतहाई खूबसूरत सुबह। आई मिस्ड लुक्सर। मुझे यहाँ पे 3 दिन देने चाहिए थे। इतना खूबसूरत ऐसा लग रहा है मैं टंडो आदम में आया हूँ। हर तरफ केले के बाग खजूरों के बाग। दरियाए सिंध वो देखिए दरियाए सिंध। ये दरिया सिंध नहीं है ये दरिया नील है। हजरत मूसा वाली नील। ये देखें जी इस तरफ मट्टी का घर कितना प्यारा। वो देखो मालिन सफा वो सामने वो मट्टी का घर है। ये We all do together.
माशाल्लाह ये बनाना फ्रेश Yes. ये देखिए मेरा हेल्दी ब्रेकफास्ट फ्रेश बनाना यहाँ के और मैंने योगर्ट में डाल के खाया है। ये सलाद और यहाँ का फेमस लोबिया और ये मेरी प्यारी प्यारी अल्लाह की नेमत है और ये मेरा शुक्र प्यारा प्यारा अल्लाह का बहुत शुक्र करने वाला। तो अब यही हाल है रब्बी के बाद कैसी बात। अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए जी बनाना के खेतों में गर्मा गर्म चाय नाश्ते के बाद अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें उतना कम हर नेमत के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब जाएंगे हम यहाँ के स्पेशल वो जो है ना चीज़ें देखने। ये देखिए इन लोगों ने डस्टबिनें कैसे बनाई हैं। रेडी टू गो अल्हम्दुलिल्लाह। ड्रीम आइलैंड से जाएंगे पैलेस डिफरेंट देखने इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। देखें गांव कितना प्यारा है। बड़ी गाड़ी में जाएंगे हम। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हम पहुंच आए हैं एक जगह पे। इस जगह का नाम मुझे भी नहीं पता, हमने खुद गाइड लिया है क्योंकि काफ़ी ऐसी जगहें हैं चीज़ें हैं जो बिल्कुल भी नहीं पता होती, तो जो है वो बेहतर होता है कि गाइड लेके वो हमें गाइड करे। और अभी यहाँ से लेके खरीदेंगे हम टिकट और उसके बाद जाएंगे आगे। गॉट अ टिकट अल्हम्दुलिल्लाह। चलो जी से जो है ना टिकट एक और लिए। अब हम गाड़ियों में बैठ के जाएंगे। यूबर की टोपी गिर गई है और वो लेने गई है। आराम से आओ सफा। अजीज सुल्तान के महल में और मकबरे में आए हैं, पे आए हैं। अपने ऊबर के 5 मिनट सफर करने के बाद हम पहुंच आए हैं। यहाँ पे कुछ है। Here the roots of henna tree Queen Hatshepsut had been expedition. सफाई इधर खड़ी हो। चलो जी अब हम ऊपर की तरफ जाएंगे। ये बता रही है कि हमारे पास इतनी चीज़ें थी यूनिक जो कि रशियंस अमेरिकन्स और बहुत सारे ममालिक हमसे ऐसे ही फ्री में लेके गए। उन्होंने हमें कुछ पे नहीं किया, कुछ दिया नहीं। अब हम उनसे रिटर्न ले रहे हैं मम्मीज़ और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन वो हमें दे नहीं रहे। तो पहले इनकी हुकूमत को इतनी अकल नहीं थी अब आई है तो बहुत सारी चीज़ें हाथ से निकल चुकी हैं। देखें 300 साल पुराना किला। और देखें पीछे पहाड़ है। यहाँ पे कोई बारिश कोई सर्दी का चांस नहीं, हर टाइम गर्मी गर्मी गर्मी। कैसे लोगों ने मेहनत कर कर के चीज़ें बनाई थी, कहाँ से ला के क्या दिमाग पाए थे। I'll show you the roots of a tree. Here, this is Somalia country. How do you know it's Somalia? Because look at the houses, arc, not flat roof. Egypt had no rain. Somalia had raining. That's why the style of the house is different from Egypt. Look at the palm tree. Look at the dates. Look at the water, zigzag. Because this is the Red Sea, not the Nile River. When you look at the figure, different fish. The first figure we can find the turtle. And in the river you don't find turtles. No, it is always in the of course sea. I'm not different fish. Yeah. Here also guys, look here guys, close to me here please. Look at the donkey. The donkey, you know, they ride the donkey to Queen of Somalia because she's very fat. Can you see the big size woman in the middle? Yeah. Yes, in the corner we can see Egyptian worker. Had red skin because Egyptian Somalia had same skin. The architect show us what is the difference between. Make the skin is different.
Here in the corner we can see Egyptian worker. They had been brought all the product from Somalia country to Egypt. Oh. In the blue color we can see different fish. The middle figure of the fish is straight. On the top we can find the baboon and the monkey near to each other. Here finally we can see Egyptian worker rowing and return back to Egypt. Oh my God. Yes. So ये यहाँ की क्वीन जो थी वो सोमालिया की थी, वो थोड़ी सी हेल्दी थी, और इजिप्ट की जो क्वीन है वो कह रहे हैं कि वो पतली पतली होती। फनी। 3,500 साल पुराने कलर्स और बिल्डिंग्स हैं, और इजिप्शियंस के पास सोमालिया की प्रिंसेसन भी थी और इटालियंस वर्कर थे। वाह। अब ये मुल्क बहुत नीचे बैठ गया और यूरोप देखो कितना ऊपर चला गया। पहले वो लोग इनके नौकर थे। हम एक और बहुत खूबसूरत जगह पे आज आए हैं, और ये 3,500 साल पुरानी जगह है। are now in the most famous chapel. This chapel is dedicated for this god. He is the god of mummification. This chapel guide the king had two positions. Sometimes we saw him standing like this, his leg together, his hand and shoulder. He had a blue skin and curved beard, meaning show himself after death, meaning he traveled to the heaven and he had a blue skin. If the king legs not together like this and he had red skin and straight beard, meaning show himself when he's alive. For example, look here, look at the king standing, red skin, legs not together, straight beard, show himself half life. When you look at the other side, look, half death. Skin, legs not together. He died and traveled to the heaven. So the king had two positions, half life and half death. And in front of the king, we can see the eagle, falcon. This is a figure of God of protection. We called him Horus. By the way, the king had been offering to Horus, to God of protection. In ancient time, my friend, very difficult to support women to rule Egypt. But how Queen Hatshepsut, she be queen of Egypt? Queen Hatshepsut, she had 3 brothers passed away young. She's only 1 daughter left from the biggest family. King married several wives. One of them, she got pregnant once and she had a son. Called him Tutmosis II. In ancient time, to protect the royal family, the daughter get married from half brother. It happened in that time. So by the way, Queen Hatshepsut, she get married from her half brother, and she got 2 daughters from him. King need boy. For this reason, he married after Hatshepsut. 3rd wife, she get pregnant and give him son. The name of the son, Tutmosis III. So now, in one family, we had 3 kings. Tutmosis I, queen father Hatshepsut. Tutmosis II, Hatshepsut, half brother and husband. And stepson, Tutmosis III. When her father and her half brother passed away, she find herself with a little child. He is too young. He had no experience. Hatshepsut, she had an idea to send him to the military mission, to the army, to give him wide experience to make the decision. And also she promised him she will give him the throne back. Queen Hatshepsut, she started to rule Egypt. But to the people accept her to be queen of Egypt, she had been a propaganda story. She make herself the daughter of God. She told the people God Ra, the sun God, he sent his soul to her mother, and her mother, she get pregnant from her. And then, she make herself, a daughter of God. To the people accept women idea to rule. By the way, after the Queen Hatshepsut, she had a boyfriend. His name Senenmut. He was very famous architect in that time. The one he was built this temple for her. This temple very incredible temple. Most of the temple in Egypt had same style. This temple same like the shape of the pyramid. This temple not only built outside of the temple. This temple it was cut inside the mountain. That's why it's still so well preserved right now. The most important we have to know, Queen Hatshepsut, she ruled Egypt 18 years. Since 18 years, Egypt completely changed.
became very powerful country. Economy also became very strong. The reason because no war. Also, she had been expedition different product from different country around Egypt. The most famous country, Somalia. The history of land of Somalia I show you before. By the way, Queen Hatshepsut, first time she make income salary for common people. The first time Hatshepsut, she changed the rules, and also she make, Egyptian people stop pay more taxes, from common people to the high priest. She became very popular. Before Queen death, she returned her stepson back to the throne, succeeded him to be king with her to rule Egypt. But after Queen Hatshepsut death, her stepson, King Thutmose said, is very angry from the queen situation, and he said, my mother-in-law, Queen Hatshepsut, she sent me away from the sight of the people to give the people some time to forgetting me to take the throne over our to be queen of Egypt. He make a reason for himself to destroy his figure from the temple. For this reason, many figures left. It was damaged and missing by his stepson King Thutmose III. But because the Queen Hatshepsut, she is very popular to Egyptian public, the workers, they destroyed some and they buried some. When we digging by accident, we discovered some figure for the queen, and we had been restored and returned back again to the old position where standing. By the way, the most beautiful thing we have to know, Queen Hatshepsut, she has mummy now in Civilization Museum in Cairo. They discovered the mummy in 2005, but the mummy, it was discovered a long time ago, but we had no idea this mummy for which queen until DNA, and we discovered the tooth of hair in her tombs and valley of the king. Then when check the mummy, we had been opening the mouth of the mummy, discovered all the tooth missing except she all the tooth well preserved except she missing one. So the one had been discovered in her tombs. We had been checked belong of Queen Hatshepsut. Discovered the mummy by the little tooth were discovered in her tombs and valley of the king. By the way, the most beautiful thing also we have to know, Queen Hatshepsut, she built the history by herself, no one giving her any help. But by the way, the most interesting thing we have to know, in media sometimes they put too much bad information about her, like dictatorial woman, she takes the throne and she didn't give the stepson any options to rule Egypt. That's not true. Hatshepsut, during her life, she returned him back, sharing him the throne. She gave him wide experience. For this reason, he became very powerful king in Egypt, and he ruled Egypt longer 50 years. And he became very famous and popular king in Egypt. By the way, the most beautiful thing we have to know, why everything in Egypt built like a pyramid shape. Giza pyramid, Valley of the King burial chamber, Hatshepsut temple, because my friend Pharaoh believed by step of the pyramid they travel to the heaven. What we call the pyramid in ancient time, called the Ber, Mir Ra. Ber meaning house, Ra name of the sun god, Mir the way. Together, Ber, Mir, Ra, the way to the house of the sun god. After ancient history ended and became a Greek colony, the Greeks had different mother tongue from Egyptian. So we take the letter out from the tongue, and the same time we open the lips. Very difficult actually. So that's why if you speak Egyptian, you can speak any other language easy. Because you really speak the harder language. Ancient history ended and became a Greeks. The Greeks, they had different mother tongue speaking. So we say ber, ra. Greeks say bir, ah. They change accent of आज और सफ़ा ऊपर जा रहे हैं देखने, और मालिन और मैं नीचे, क्योंकि काफ़ी सांस फूल गया चल चल के पहाड़ों पे, और फिर ज़्यादा चलती हूँ ऊंचाई पे तो मेरी हो जाती है शुगर लो, और फिर मुझे बहुत खाना पड़ता है। तो आज मैं जो है ना ट्रॉवन शुगर और फ्रूट लाना भूल गई हूँ, और आसपास कोई दूर दूर तक दुकान नज़र नहीं आ रही, इसलिए इंसुलिन पंप पे बंद करना पड़ा। करूँगी टोटली बंद, और जो है वॉक भी नहीं ज़्यादा करूँगी, यही हो सकता है। ये देखिए जी, इजिप्ट का एक और खूबसूरत शहर, जो कि टोपी गिर गई। ये इतनी तेज हवा है कि मेरी टोपियाँ गिर रही हैं। खैर कोई मसला नहीं है, बहुत ये सेकंड टाइम ये बाय बाय।